हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी क्लास में। मैं हूँ आपका टीचर फ्यूनिक्स और अब से आप मेरे साथ पढ़ाई करेंगे मेटलर्जी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फाउंड्री? A foundry is a factory that produces metal castings. Metal are cast into shapes by melting them into liquid, pouring metal into a mold, and letting it solidify. The solidified part is known as casting, which is ejected or broken out of the mold to complete the process. एक मेटल को पिघलाकर एक शेप देना, एक प्रॉपर शेप जो हमें चाहिए, उसे उस प्रोसेस को फाउंड्री कहते हैं। टाइप्स ऑफ फाउंड्री. Foundries are broadly classified based on the type of metal they work with. There are two types: ferrous foundries and non-ferrous foundries. Ferrous foundries, in which the iron as their major component, and the non-ferrous foundries as in which the iron is not as their major component. Ferrous foundries. These foundries specialize in casting iron and steel. They produce heavy-duty components like engine blocks, pipes, and parts for construction equipment. Ferrous castings are known for their strength and durability. Non-ferrous foundries. These foundries handle metal like aluminium, copper, brass, bronze, and zinc. They create lighter corrosion-resistant parts used in industries like aerospace, electronics, and automotive. Safety concern in foundry. Foundries are potentially hazardous due to molten metal, high temperature, heavy equipment, dust and fumes, and noise, which are broadly used in this field. Safety precautions. Personal protective equipment (PPE). Always wear appropriate PPE, including heat resistant clothing to protect against burn from molten metal and radiant heat. Radiant heat is the transfer of energy through electromagnetic waves in which it does not need any medium to travel. मतलब जैसे आप अभी कुछ खाना बनाते हैं तो उसका जो कढ़ाई होता है, कढ़ाई से अगर आप हल्का सा बगल में अपना हाथ रखेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगा। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रेडिएशन। ठीक है। सेफ्टी ग्लासेस और गॉगल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट आई इंजरीज फ्रॉम फ्लाइंग डेब्रिस, स्पार्क्स एंड मोल्टेन metal splash. Flying debris is the garbage or of the objects in the roadway that have fallen or flow down of a truck, trailer or other vehicles. मतलब कुछ भी कचरा जो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, उससे बचाने के लिए आपको गॉगल्स पहनना ज़रूरी है एज अ सेफ्टी. फेस शील्ड फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेडिएशन, हीट एंड molten metal splash. Gloves. Heat resistant gloves for handling hot objects and molten metal. Safety boots. Steel-toed boots to protect feet from falling objects and molten metal spills. Hearing protection. Earplugs and earmuffs to protect against excessive noise. Respiratory protection. Respirators or masks to protect against dust, fumes, and gases. Foundry mechanization. Foundry mechanization involves various processes in a foundry to increase efficiency, productivity, and safety. Raw material storage. It stores sand, metal, and additives, and it transports these materials through conveyors and vehicles. Sand preparation. Sand mixing, screening, and distribution is done by sand mullers, mixers, and classifiers for sand processing. सैंड मुलर्स ये एक ऐसा मशीन है जिसमें सैंड को वाटर, बाइंडर एंड एडिटिव्स को मिक्स किया जाता है, जिससे हम लोग को मोल्डिंग सैंड मिलता है. मोल्डिंग. ऑटोमेटेड मोल्डिंग मशीन्स फॉर क्रिएटिंग मोल्ड्स. फ्लास्क हैंडलिंग सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड पोजिशनिंग ऑफ द मोल्ड. कोर मेकिंग. कोर मेकिंग मशीन्स फॉर प्रोड्यूसिंग कोर्स and storage and handling of the core. A core is a pre-shaped insert made of sand or metal that is used to create cavities or shape in the casing.
बेसिकली ये क्या होता है कि अगर आप कुछ चीज़ को शेप दे रहे हैं तो उसमें जो इंटरनल जो कैविटी चाहिए होता है वो कोर प्रोवाइड करता है, जिससे हमें कॉम्प्लेक्स इंटरनल फीचर्स प्रॉपर्ली मिल पाते हैं इसकी वजह से। मेल्टिंग furnaces for melting metal like electric arc, induction and cupola furnace, एंड हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ऑटोमेटेड पोरिंग सिस्टम फॉर प्रिसाइज मेटल डिस्पर्सिंग मीन्स एक प्रॉपर या एक स्पेसिफिक अमाउंट में मेटल को सेपरेट करता है। पोरिंग पोरिंग लैडल्स और रोबोट्स फॉर पोरिंग मेटल इनटू मोल्ड्स, cooling line for molds to solidify, shakeout, automated shakeout system to separate castings from mold, sand recycling system to reclaim or reuse the sand, fettling, fettling equipment for removing excess material from the castings। मतलब हम लोग जो कास्टिंग करते हैं जिसमें हम लोग का हल्का फुल्का मटेरियल बच जाता है, उसको हम लोग थ्रू ग्राइंडिंग, कटिंग एंड ब्लास्टिंग मशीन से उसको हम लोग फिनिश करते हैं। एंड आफ्टर दिस वी use heat treatment, surface coating or painting for its protection, and automatic handling system for moving casting through finishing stages. Inspection and quality control, inspection stations for dimensional check and quality assessments, and the non-destructive testing equipment, which is NDT test, in which we inspect the material without damaging it. Casting, storage and shipping, storage for finished casting, and packaging and shipping system. In this specific mechanized foundry, it will depend mainly on the size of the foundry, the type of casting produced, and the level of automation desired. Thank you guys for watching this video.